take you to my PPT, and let's take it in an interactive mode. That will be good. So whenever you have question, you can just unmute yourself and ask in between. Okay. Is my screen visible? Because I can't see you all. Yes, ma'am. All right, thanks. So the topic which is talk of the town now is plastic waste and plastic waste management. So I'll take you through a very small aspect of plastic, then going on to the plastic waste and then to its regulation very briefly. So in case you can just talk about what are plastics, in case somebody can just tell me about what are plastic. Unmute yourself and tell me, please. Anyone? Which take more times to they don't मतलब वो recycle नहीं होते हैं. Now we are recycling, but they take मतलब biodegradable नहीं होते. They are not biodegradable. We can't degrade them. Okay, great, Divya. You have answered all the aspects of plastic together. Okay, any more definitions from anybody's side? Plastics? Anyone? Adarsh? यस मैम. मैम मतलब प्लास्टिक वेस्ट को कैसे डिस्पोज करेंगे और कैसे अर्थ पे उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कौन सी एजेंसी है जो इनको टेकल करती है? Okay. ये सब. ओके, तो प्लास्टिक का बेसिक डेफिनेशन जो हमने बहुत स्कूल टाइम में पढ़ी, सो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट व्हाट आर प्लास्टिक्स. Plastics were found from a very derivative of a petroleum product. It is called as naphtha. So it was a waste product and it was eventually converted into a wonderful material. So it is rightly said, as Divya said, that it is a synthetic component and it can be basically molded into any shape. So that is the basic property of plastic. So in case I talk about basic plastic production again, it is very superficial. So a monomer like ethylene, propylene or styrene is converted is given a heat pressure catalyst and added with some additives, and it is made into a polymer that we study in science theories also. So it is the basic production process of plastics. So plastics, when we say that it is coming from a fossil fuel, I didn't hear the word fossil fuel when we talk about plastic. So in case we talk about the conventional plastic which comes from fossil fuel, that is petroleum derivative. So it is added with certain things which are called as additives. So in case I talk about the fillers are basically giving its mechanical strength to plastic so that it can be molded into any shape. In case I talk about plasticizers are basically which is making providing it a elasticity दे देते हैं उसको. In case I talk about the stabilizers briefly, तो stabilizers क्या करते हैं, उसको stabilize करते हैं ताकि उसकी longevity बढ़ा दें, मतलब उसकी life बढ़ा दें plastic की. That is what stabilizers do in plastics. In case I talk about colorants, so you see those beautiful colors in plastic, so these come from adding up the additives to it. That is called as colorant. Then lubricant briefly क्या करता है, जब प्लास्टिक को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जाता है तो within the monomer also there is a lot of friction. So it reduces the friction and with the machinery also, the production machinery. तो उसकी lubrication से क्या होता है, whenever we add it, so it makes the process of production of plastics really easy. And then comes the last thing, that is flame retardants, that makes it prone to less prone to fire hazards. So in case I talk about whether plastics are a friend or enemy, so anybody can briefly tell me, what do you think about plastics? Do you think that it is a friend or an enemy or both, whatever you feel like about plastic? Anyone wants to answer that? What do you think about plastics? Are they good, bad? Anyone? Ma'am, they can be a friend and foe at the same time.
Okay. But it depends on the use, right? How we are using, like for an environment, it is not good. Like they can't degrade properly. But for a human use, we are totally we are totally dependent on plastic, and there are also different kind of plastics nowadays in the market which can be used and can also be like reduced to certain level that so that they can't harm the environment. So I can say it can be a 50-50, friend also and foe also, like enemy also. Very good answer. Very good. Anyone who wants to address it? Yes? Please speak. Unmute yourself and speak. Yeah. So as Divya said, it is both a friend or a enemy in different situations. Yeah. Anyone wants to add up to it? So because of its versatility, basically, it is having a resistance to chemicals. It is talking about electric and heat insulation. It is an excellent product which provides a lot of safety from the electrical equipment. In case we talk about our mixer grinders, we talk about anything which is made up of plastic and the e-waste. So it is again having a lot of properties. Then high strength to weight ratio. It is durable. It is light in weight. Excellent barrier properties, and it is easy to manufacture. So it is both obviously a state of both the things. But in case we talk about its consumption, anyone? Rashmi, your slide is not moving. If I don't know whether you have moved or not, and it is not in the presentation mode as well. Okay, let me just. Yeah, now it is moving, but put it on the presentation mode. Okay. Which slide can you see now? Plastic, friend or foe? Is Yes. it moving? Yes. Okay. Now is it moving? The next slide, consumption and disposal. No, I think you just close it and One put it on presentation mode first and then share it. Okay, okay. 1 second. Now is it moving? Yes, ma'am, it's visible, ma'am, now. Okay, great. Thank you. So in case we talk about friend and foe, so when we talk about both the things, that it is a friend and an enemy for both the things are important to address. So when we talk about its management, so the consumption is okay. We are consuming it because it is important to consume it, right? We can't do away with the plastic instantly. So when we talk about consumption, we talk about disposal also. कि जब हमने कंज्यूम किया और उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहे, राइट? सो इट इज एंडिंग अप आइदर इनटू अ लैंडफिल और इट इज बिकॉज वी डू नॉट हैव अ सोल्यूशन टू इट, देयर इज सो मच ऑफ वेस्ट, सो वी प्रॉब्ली बर्न इट thermal destruction के through, or it goes into the water bodies instantly when we do not treat it and goes it adds up to the landfill or the water bodies. So in case we roughly talk about the figures, it is very surprising to know that out of 26,000 tons per day, which is the data given by CPCB in 2018, only 60% of it is getting recycled and collected and rest of it is getting littered. So again, very warning to address. So in case we talk about classification of plastic, तो generally हमने school times में दो type के plastics पढ़े थे, thermosets and thermoplastic. In case somebody wants to address that, thermoplastic, thermosets क्या था? It is basically categorization on behavior of heat. For a hint, what do you think is thermoplastic or thermoset? Anyone? Yes, Divya, do you want to try? Ma'am, I think it resists some heat or temperature. Yes, so in case we talk about providing a heat to specific kind of plastics, so in case it gets molded and does not get back, so it is called as thermoset.
So, and thermoplastic is basically when we provide the heat and it gets back to the shape and can be molded into any shape. So all the categories which you see is majorly thermoplastics, most of it, and some are thermosets like Bakelite you see. Right? So we go on to the direct categorization of these things. So have you ever noticed this sign anywhere? Did you see this sign anywhere? Where do you find it? in like 3R concept. 3R कॉन्सेप्ट और मैम किसी भी मतलब एड में भी रहता है कि रिड्यूस रिसाइकल एंड ओके तो इसका मतलब क्या क्या लगता है इसका मतलब क्या होता है कहाँ देखा है क्या मतलब होता है व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स यू सी इट आई थिंक एवरीवेयर राइट इन ऑल द लेबल्स या प्लीज Ma'am, is that mean to say, ma'am, reduce, reuse, and recycle? Okay, does it say that? It means that you think that it is reduced, it is 3 hours, right? Most of you think that it is 3 hours. What Yes, else? ma'am. Okay. Ma'am, it's recycling. The arrow chasing each other, it's recycling. Okay, you mean that it says that in case anything which is having a sign like this can be recycled, right? Yes? Yes, ma'am. Okay. Have you seen this kind of sign? Yes, ma'am. What It does it means mean? we can recycle this 5 times. Okay, great. You think that it can be recycled 5 times. Okay, what else? No, ma'am, it's a category. It's a category of yes plastic. मैम इट्स There are कैटेगरी Okay, so it's like one of you 7 to think 8 that it is a categories. category. It is nothing to do with how many times you recycle. It is to do with the category. What else? Is it true? What is true? Is it to deal with the number of times it can be recycled, or is it to deal with, what is the category of plastic? I think it's a 5R concept. It is? 5R concept. It Reuse, is? reduce, recycle, rethink. Okay, so I will solve all the confusion because we have been seeing these signs all together, all everywhere. I think in labels, in every equipment you receive, you see these signs, right? So when I talk about this sign, so its sign doesn't mean individually that an item can be recycled, but it is capable of recycling. So you have to understand that when you say that the material can be recycled, it is capable of recycling or recyclable. दो चीजों में difference है. तो this is basically a Mobius loop बोलते हैं इसको, जो sign है left side में. So it basically means that it is capable of being recycled. But it doesn't mean that it can be recycled completely. So that has to be understood, right? And when you say that a number is put inside it, so most of you rightly said that it has nothing to do with number of times it gets recycled. It has to do with the type of plastic it is. So we go on to the type of plastics from here. So there are basically when we say about Indian Society of Plastics, when they gave different categorizations of basic categorizations of plastic when they were produced. So they fall under 7 different categories. The first one is PET, which you see we call these bottles as PET only, soft drink bottles, right? So you see it in soft drink bottles, you see it in water bottles, many peanut jar, butter jars, you see those PET, hard plastic that you see, pickle jars, jelly jars, these are all made of PET, that is polyethylene tetraphthalate, which is one category. So when you see one, that is PET, it has nothing to do with number of times it gets recycled, alright? But it is easily recyclable, the first category. Then second is high density polyethylene. You see it in shampoo bottles, you see it in your bathroom in the buckets you use, in the tumblers you use, in the grocery, some of the grocery bags you use. You see those curd, उसमें भी आपको जूस बॉटल्स में बहुत सारी जगह पे ये HDP कैटेगरी का आइटम दिखता है. तो whenever you see those labeling, you have to notice now that it has got a sign, it has got a number on it. In case it is just having sign, it doesn't mean that it is not assigning itself in a categorically manner, that it has to have a number also in that sign. Then the third category is PVC. PVC से हम बोलते हैं कि pipes, right? So PVC के बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, जैसे आपके credit cards, debit cards भी PVC material के होते हैं. So there are a lot of things like window frames, lawn chairs, children toys also are made from PVC.
Flooring is also made from PVC. You see those tilings also are made from PVC. So that is the third category of plastics. Then we go on to LDP, that is low density polyethylene, that is LDPE. So you see it in dry cleaning bags, you see it in a lot of polythene bags, you see carry bags are made up of LDP. Then a lot of wash bottles, squeezable bottle, frozen food bags, zip pouches, these are all made up of LDP. You see those milk pouches you get at home, it is also made up of LDP. So now when you see it, you notice that it has 4 and this sign written over it. Then category 5 comes in, that is called as polypropylene, that is PP. So you see it in ketchup bottles, a lot of bottle caps are made up of PP, straws are made up of PP, and packing tape, medicine bottles, a lot of it is your small cream bottles are also having those sign in it, that is PP, polypropylene. Then category 6 comes in, that is polystyrene. Majorly it has the category of disposable. When you have heard about single-use plastic, so majorly most of the single-use plastics are categorized under polystyrene. Then comes category 7, which is put onto all the categories which are all the things which are not categorized under all the above 6 categories are all categorized in category 7, and majorly it is having category that is called as multi-layered plastic. I will explain it in the further slides. Any questions on the category of plastics? Any question? But ma'am, it is not mentioned properly. Why it is so? Where? Mentioned on the label, you say? Yeah, ma'am, it is not always mentioned ki, like it is 4, 5. It is not always mentioned. That's what I'm saying, Divya. Whenever we see and categorize these things, so when I started with that diagram which is not having the label in it, so it doesn't mean that it is recyclable. That's what I'm saying. When you talk about a plastic commodity, in case it is not having those sign, it is not having those number, so that means it is not properly labeled. वो आपको randomly कई बार क्या होता है, local products होते हैं, उसमें आप without labeling, क्योंकि you can, in case people are not aware about it, so they just put it like that. It is not a sign. वो आपको कई जगह पे जैसे आप लोकल बॉटल्स कभी आप वाटर बॉटल्स में देखेंगे, या आजकल बहुत इनएक्सपेंसिव बहुत क्यूट बॉटल्स आ रही हैं आजकल, मैंने देखा वाटर बॉटल्स, तो उसमें क्या होता है कोई साइनेज नहीं होता, आप नीचे देखोगे तो कई बार क्या होता है वो लेबल्ड नहीं होती, विच इज वेरी अलार्मिंग, एंड यू हैव टू सी फॉर दोज साइंस एंड दीज नंबर्स विच आर रिटन ओवर इट, so that you identify what category of plastic it belongs to. Yeah? Any questions? Can I ask one question? Yes. Yeah, absolutely. Ma'am, we talk about microplastic. In Yes. what category they will assign? Okay, so in case we talk about microplastic, तो microplastics basically क्या होता है कि प्लास्टिक कोई भी माइक्रो, जैसे अगर आप पॉलीस्टाइरीन बोलूं मैं, या HDP बोलूं, या पेट बोलूं, कोई भी टाइप ऑफ प्लास्टिक बेसिकली अगर बहुत नैनो पार्टिकल्स में विदर आउट हो जाता है या बहुत छोटे पार्टिकल्स में, तो किसी का भी माइक्रोप्लास्टिक बन सकता है. मतलब माइक्रोप्लास्टिक इज नॉट मेजरली अ कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक, बट इट इज मेड फ्रॉम all of these categories. It is small, minute plastics which come out of these categories. Yeah? जैसे एक प्लास्टिक है वो विदर आउट हो गया, छोटा छोटे पार्टिकल्स में हो गया, तो जब नैनो पार्टिकल्स एक मिनिमम साइज में हो जाता है, नैनो पार्टिकल्स की साइज में, तो उसको हम बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक्स की कैटेगरी में डालते हैं. तो इट इज नॉट अ कैटेगरी. Basically, they are okay. So they are not basically a category. Absolutely, absolutely. All right. Any questions? Should I proceed? Okay. So we go on to the term that is called as single-use plastic. Again, heard in newspapers nowadays. Very much talk of the town. Again, I'm saying. So, what do you think are single-use plastic? We can only use at once. We can only use at once. Okay. Yeah. Close. Like Bisleri bottles and all. After that use, we can dispose that thing, but we are not. We are using it continuously. क्योंकि हम It's our fault. Absolutely. Absolutely. So a lot of items, in case we feel that we can use it more often, so those single-use items are keeping it inside our homes and reusing it. That's true.
So when we talk about single-use plastic, single-use plastic. Ma'am, it is also an Indian culture. We cannot throw properly and put outside the drain, ma'am. Then Absolutely. again, they are reusing the plastic. They are more Absolutely. dangerous to human body. Absolutely. You're right that it is a very good fact that in case you have bought it and in case you have it, you have you can reuse. वैसे तो हमें, in case we talk about single-use plastic, we have to refuse using it because it is difficult to recycle. Yeah. So अगर आपने लिया भी तो it is a good thing that you are not throwing it away like that. You are reusing it or you keeping it to yourself and giving it to the registered recycler at least. Yeah. So that is a good, thing to address. So that is true. So when we talk about single-use plastic, तो generally single-use plastic की बहुत सारी definition initially आई थी जो आपको भी screen पे दिख रही होंगी. It was difficult to define a single-use plastic. तो different European nation ने बहुत सारे, बहुत सारी definitions आई उस time पे कि worldwide कि definition single-use plastic को define करने के लिए. So in case we talk about these 60 countries majorly defining what are single-use plastic, किसी ने बोला उसको कि inexpensive है, convenient option for many application. But in case I talk about definition in India, so it came in August 2021 under PWM rule. So it was categorized as a thing which is a plastic item intended to be used once for the same purpose before being disposed of और recycle. So in case it is being, मतलब उसका intent क्या है कि एक purpose के लिए एक ही बार use होता है, तो that is called as basically before disposing of or recycling, it is called as a single-use plastic. So it was defined very late in the rules because it was required to define it. So it was defined in August 2021 under PWM rule. So, in case I talk about what are the things which are banned, क्यों ban हुई, कौन से list of items ban हुए, तो there were 21 list of items which were given again in the rule in August 2021, one of the amendments. So these things, a lot of things were under the category of banning. And for some time, like 6 months, there was a regulation that came up and people were very strict about it. The authorities were strict about it. But again, because banning is not the solution for carrying out, phasing out those plastics. So again, it was not that successful, but these list of items were banned because they are basically difficult to recycle. So when I go on to plastic, explaining plastic categories, so I go on directly to now plastic waste management rule. So as in the last session also by Dr. Priyank, it was explained that plastic waste management became the talk in 1999, not as a rule directly, but obviously it started with the focus on the carry bag, which has to be, it was considered that less than 20 microns should not be considered for carry bags. So it was under scrutiny in 1999. Then in 2009, in a draft plastic waste management rule, so emphasis was again on plastic carry bag that was difficult to manage, and then multi-layered plastic. Then in 2011, plastic waste management and handling rule came up in 2011. So again, 40 micron criteria was decided there. And the concept of EPR was also introduced first time in 2011. And then in 2016, that was 18th March 2016, that plastic waste management rule came in with a focus of increasing the micron size to more than 50. And a lot of amendments have been happening considering the demand of the people who are managing it and producing it. So it has been heard, and you can see that, imagine how many amendments have come after 2016 rule, and it gets amended every 3 or 2 months regularly now. So the, basically when I, sum up those plastic waste management rule, overall, what is the rule saying? So it basically puts a lot of focus on what is the responsibility of every stakeholder in the plastic waste management rule. Because in case we say कि हमारी responsibility नहीं बनती,
we are not the producers, we are not the people who are, making it, producing it. जो बना रहा है उसको control करना चाहिए, जो circulate कर रहा है उसको control करना चाहिए. So in case these, we talk about such things till now, after being an environmentalist also. So it is, very important to now throw light on things which PWM rules are saying that you being a person who is using it has to be responsible for managing it also. So polluter pay principles also explains it. So under, you know what is EPR now, right? Can anybody answer? You have heard about this term in the last 2 days so many times. So what is EPR? What is EPR? Anyone wants to try? No Googling. Yes, Nishant? इट्स यहाँ पे EPR का एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो क्या जो हमारे पास जैसे कोई भी प्लास्टिक है या एंड टू एंड मतलब फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव हमारी वो होनी चाहिए कि भाई टिल डिस्पोज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो प्रॉपर्ली डिस्पोज हुआ है नहीं है फ्रॉम प्रोडक्शन टू एंड. Absolutely. So when we talk about EPR, तो EPR मतलब हो गया Extended Producer Responsibility. तो इसमें क्या है बेसिकली कि हम लोगों को जैसे निशांत ने बोला कि बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टिल द एंड ऑफ द लाइफ. So EPR is majorly for all these category which you see on the slide, that is plastic, e-waste, batteries and tires. So in case I talk about EPR in plastic waste, so these PWM rules, briefly speaking about what is the rule saying. तो जनरली जब हम रूल की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें आप डायरेक्टली जब खोलेंगे PWM रूल 2016 तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी. But to throw on the light to who is responsible, so applicability is basically on every waste generator. So you being a waste generator, you living in the society, you being the bulk waste generator, you are also responsible for, the rule also applies to you, right? Then urban local bodies or rural local bodies like Gram Panchayats, manufacturer who is manufacturing it, then importers who are importing it, the brand owners who are, basically putting their name on it, and plastic waste processor who are basically processing and the producers, right? So it is applicable on all these stakeholders, which we are also forming a part of it, that is as a waste generator, right? And the exemption to these rules is basically on the export oriented unit. जब हम import की बात करते हैं तो जो export oriented units हैं वो इस rule में नहीं included है. Then units in special economic zone notified by central government manufacturing their products against an order for export. तो ये exemption अभी rules में मिला हुआ है. So in case I talk about हम plastic waste management की बात कर रहे हैं तो EPR plastic waste में क्या कर रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं EPR के अंदर, right? What is being done? So in case I am a person who is, dealing with plastic packaging, I am a person who is producing it or, putting it to the market, right? So I need to identify myself which category I belong to, whether I am a manufacturer, whether I am a producer, I am an importer, brand owner, plastic waste processor or a seller. So in case I talk about manufacturer, simple manufacturer और producer में कोई difference बता सकता है? Anybody who can try this thing? Manufacturer producer में क्या difference होता होगा? What do you think can be the basic difference between manufacturer and a producer? Manufacturer means like garments, some product manufacturing. Producer means it specifically producer for plastic, I think. Okay, close. Anyone? Anyone? Yes. Manufacturer is create the raw material and producer was using the raw. Very good, very good. So you can you be a little loud? So he said that manufacturer is basically creator of a raw material
So basically the people who are dealing with the refineries directly getting the raw material are manufacturers, and producers are the people which are basically using those raw materials to produce something. That is, in case you see the right side diagrams, the first one is basically manufacturing. In case refineries se hum le rahe hain, connected hain, and you are procuring the raw material, you fall under the category of manufacturer. In case you are using that raw material to make some product, right? Plastic packaging bana rahe hain, so then you are considered as a producer. In case I talk about directly now a brand owner, राइट तो ब्रांड ओनर क्या हुआ, आपने प्रोड्यूस नहीं किया, आपने क्या किया, आपके ऊपर एक प्लास्टिक की बोतल मिली जिसमें आप उसके ऊपर अपना ब्रांडिंग करेंगे. मतलब जैसे मेरे को एक बोतल प्रोक्योर करके मैं उसके ऊपर अपना, मैं बोलती हूँ कि मैं इस वाली कंपनी एबीसी कंपनी को बिलोंग करती हूँ, तो मैंने एबीसी का उसमें सिंपल सी बोतल जो मैंने प्रोक्योर करी एक प्रोड्यूसर से, उसके ऊपर लेबल कर दिया. दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांड ओनर. सो उस कैटेगरी को हम ब्रांड ओनर बोलते हैं, जिसमें अपना यस प्लीज क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम इसका एक हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं अमन गुप्ता का. मैम ये बोर्ड्स के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं. मैम ये जेबीएल में एक मैनेजर लेवल पे थे जब कोविड के टाइम पे इन्होंने अपनी जॉब लेफ्ट करी. उसके बाद में मैम इन्होंने कुछ ऐसा किया कि मैम मतलब इन्होंने आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब चाइना से इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए, क्योंकि मैम वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है बट उसमें यूज तो प्लास्टिक का होता है मैम. बट इन्होंने चाइना से लेके और इन्होंने अपना नाम देके उसको इंडिया में सप्लाई किया. इट्स कॉल्ड ब्रांड ओनर मैम. बिल्कुल, अगर हाँ बिल्कुल आपने सही बोला कि वो ब्रांड ओनर भी हुआ, और क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो वो कई बार क्या होता है, रूल्स कहते हैं कि आप एक ब्रांड ओनर और इंपोर्टर साथ में हो सकते हैं, राइट. इन केस यू आर इंपोर्टिंग सर्टन मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, सो यू हैव टू category do a registration. When I talk about registration later, so you have to do it under brand owner also, importer also. You right example. Good. Thank you, ma'am. So you have explained both the categories for me now. It is importer also. So I was explaining, you understood what is manufacturer, right? Producer. Then brand owner is somebody who is putting the name or trademark over the packaging, your name and trademark, right? And then comes the category of importer, the person or a company who is importing some plastic packaging from outside, and then probably selling it inside India for outside also, as explained. Then comes the category of plastic waste processor. Plastic waste processor का simple meaning उसके नाम से आता है, जो प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करते हैं. तो अब प्लास्टिक वेस्ट या तो क्या कर रहे हैं, या तो वो रिसाइकलर होगा, उसको रिसाइकल कर रहा है, या तो वो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर उसको को प्रोसेस कर रहा है. कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल विच इज नॉन रिसाइकलेबल जनरली, उस प्लास्टिक को हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में भेजते हैं, सो दैट इट कैन बी burnt into higher temperature under controlled pollution conditions. Then waste to energy plants में भेजते हैं, that is also categorized under plastic waste processors. Then we talk about sellers. So sellers are again third party, जो basically क्या कर रहे हैं. These are all the definitions I was talking about. So seller are basically the person who is selling the plastic raw material. Intermediary भी बोलते हैं, third party भी बोलते हैं. Material for plastic packaging for further use or sale. They are not putting their names but basically selling it. Yeah. So any questions? Yeah. Please ask. मैम क्या सिंगल पर्सन ये सब कर सकता है? जैसे अभी आपने एग्जाम्पल बोला कि यू कैन बी अ ओनर एंड यू कैन बी अ ब्रांड ओनर एट द सेम टाइम. तो कैन अ सिंगल पर्सन कैन होल्ड दिस ऑल द थिंग? In case I talk about a person who's producing it, yes, producer can be an importer also, and a brand owner. Yes. Brand owner can be, yes, a single person can also do it. But obviously there are industries like we see when we handle the clientele also. So they are mostly people who are brand owner and importer, producer and with importer. Manufacturers are very few. In the list is also there at CPCB portal. So few, but again obviously these can be together and can be not all together, but obviously they can be serving 2 or 3 people can be serving the same purpose, but have to get registration under different categories. That is true. Okay. Yes. Any questions?
Any confusion? You understood what is manufacturer, producer, brand owner. When you see these number, which is 3M, 3T, 3B, these are all clause. When you see it under rule, plastic waste management rule, तो उसको मैंने briefly लिखा हुआ है, but ये इसी clause के अंदर आते हैं when you see it refer to the plastic waste management rules. Yeah. So we go on to the plastic waste management categorization. तो हमने 7 कैटेगरीज पढ़ी जो इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक्स ने दी थी, जब प्लास्टिक्स बनते हैं और किस तरह से कैटेगराइज करते हैं. बट हम जब ईपीआर की बात करते हैं, ईपीआर के अंडर, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर, इस पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, बेसिकली पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को जनरली उसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 डिफरेंट कैटेगरीज में. पहले सिर्फ 4 कैटेगरीज होती थी, अभी रीसेंट अमेंडमेंट आया उसमें 5वीं कैटेगरी भी ऐड हो गई है. सो दीज 5 कैटेगरीज, वो सातों कैटेगरीज जो आपने पढ़ी थी इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक जो देती है, इसी के अंदर वो मोर और लेस सारे कैटेगरीज फॉल करती हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट कैटेगरी 1, इट इज कॉल्ड एज रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग. रिजिड मतलब समथिंग, एनीवन? रिजिड का मतलब क्या हुआ? Ma'am, that can't be like break hard, very hard. हाँ, right. वेरी हार्ड. मतलब ऐसे नहीं होगा कि ब्रेक कर ही नहीं पाओगे, कर सकते हैं, बट इट इज हार्ड टू टच एंड फील. या सो इन केस आई टॉक अबाउट बॉटल्स, जब मैंने एचडीपी बॉटल्स की बात करी थी, शैम्पू बॉटल्स की बात करी थी, पेट बॉटल्स की बात करी थी, तो दीज आर ऑल कैटेगराइज्ड अंडर कैटेगरी 1, राइट? दैट इज कॉल्ड एज रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग. इसकी पैकेजिंग को बोलते हैं रिजिड प्लास्टिक और हार्ड प्लास्टिक पैकेजिंग. Then category 2 is flexible plastic packaging. Flexible matlab which is soft, right? In case you see those carry bags that are all under flexible plastic packaging. You see those rice packs that you get, जिसमें आपका आटे की थैली आती है, that is also bread के पैकेट्स आते हैं, ये सारे आपके flexible category में आते हैं, right? Then comes category 3, that is multi-layered packaging. अब multi-layered packaging is a very interesting category. In case somebody wants to attempt, what is multi-layered? Do not see the definition. Just tell me, what do you think is multi-layered? कहाँ दिखता है multi-layered packaging? Yes. टेट्रा पैक्स में बहुत कॉमन होता है multi. वेरी गुड, वेरी गुड. सो यू सी मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग. तो कई बार हम मल्टी लेयर्ड सोचते हैं कि बहुत सारी प्लास्टिक की लेयर होंगी, उसको बोलते हैं मल्टी लेयर्ड. नो, व्हेन यू से मल्टी लेयर्ड ऑलवेज रिमेंबर अंडर दिस कैटेगराइजेशन, मल्टी लेयर्ड मीन्स एक उसमें प्लास्टिक की लेयर, मिनिमम एक प्लास्टिक की लेयर होनी चाहिए और एक नॉन प्लास्टिक लेयर होनी चाहिए. सो एज शी सेड दैट इट इज बेसिकली, इन केस वी टॉक अबाउट टेट्रा पैक, सुना होगा आपने, जो फ्रूटी के मिल्क कार्टन्स भी आते हैं, फ्रूटी के कार्टन्स भी आते हैं, तो वो सब बेसिकली क्या है, उसको आप जब खोल के देखेंगे एक बार, तो उसमें अंदर एक पतली सी प्लास्टिक की लेयर होती है जो थोड़ी शाइनी दिखती है. जब हम जिसमें स्ट्रॉ डालते हैं, दैट इज अ मेटालिक piece you see at the top of the can, top of the basically that pack. And when you see that paper, which is so it is having 3 different category of things, that is paper, plastic and aluminum, right? So multi-layered simply means it can have plastic and non-plastic, that can be paper, plastic and some metal, that can be multi-layered plastic. तो उसमें 7 layer of वन प्लास्टिक, जैसे हम टेट्रा पैक्स या जब हम बोलते हैं कि जो कार्टन्स होते हैं उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, तो उसमें 7 डिफरेंट लेयर की बनी होती है, 8 डिफरेंट लेयर की बनी होती है, एक पेपर, एक प्लास्टिक, पार्टली एल्यूमिनियम. सो इतनी सारी लेयरिंग करके आपका ये मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग बनती है. दैट इज दैट कैटेगराइजेशन. तो यू सी all the things which they're having mostly shiny surfaces. In case I was talking about, there was chips packet you see, right? तो चिप्स पैकेट में आप जब उसको खोलेंगे तो आपको एक मेटालिक लेयर दिखेगी, वैसे भी उसमें एक शाइनी सरफेस दिखेगी. तो इट इज हैविंग अ मेटालिक लेयर एंड अ प्लास्टिक together, right? So these are multi-layered plastic, basically multi-layered packaging. Any questions on this? Multi-layered is clear, I hope. So we go on to the category 4, that is compostable plastic. Compostable plastic, yes, please ask. मैम ये जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज कितनी ज्यादा हार्मफुल है उस बेसिस पे या जस्ट जनरल कैटेगरीज है?
सी जब हम ईपीआर की बात करते हैं तो ईपीआर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर क्या है कि बेसिकली हमने एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बोलते हैं कि ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसको टैकल करने के लिए, राइट। तो इसलिए बेसिकली जब रूल्स बने तो रूल्स में ये कैटेगराइजेशन हो गई कि जब हम लोग जनरली हम उसको रीजन के हिसाब से नहीं डिसाइड करेंगे किस तरह से प्लास्टिक बन रहा है, राइट। हम उसको कैटेगरिकली पैकेजिंग के हिसाब से, क्योंकि पैकेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसको, या ब्रांड ओनर है उसमें अपना टैग लगा रहा है, तो उसको बेसिकली रिस्पॉन्सिबल वो होगा जो बेसिकली उसको पैकेजिंग को लाएगा। तो इस कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया सो दैट अ लेमन पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजिड, व्हाट इज फ्लेक्सिबल। कोई इंडस्ट्री है जिसने बहुत टेक्निकली, ऑब्वियसली सारे लोग टेक्निकल नहीं है जो ईपीआर हैंडल कर रहे हैं, तो आपको उसके रीजन से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली टू अंडरस्टैंड व्हाट कैटेगरी इट बिलोंग्स टू, मतलब वेरी सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजिड, व्हाट इज फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट होगा, व्हाट इज मल्टी लेयर्ड, कि अगर आपको दिख रहा है कि उसमें एक लेयर ऑफ प्लास्टिक है नॉन इलास्टिक, तो आप उसको कैटेगराइज करोगे मल्टी लेयर्ड में। सो इसीलिए बहुत इजीली इन ईपीआर रूल्स में आपके बेसिकली इसको कैटेगराइज कर दिया है, सारी प्लास्टिक कैटेगरीज को इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, सो दैट आसानी से इसको कैटेगराइज करके इसको बेसिकली अब आगे जो मैं आपको समझाऊंगी कि जब हम इसको फाइल करते हैं और आप रेगुलेशंस को कैसे आगे प्रोसेस करते हैं, तो इसमें इजीली यू कैन कैटेगराइज ऑल द प्लास्टिक पैकेजिंग इनटू दीज 5 कैटेगरीज। या इज इट ओके? योर क्वेश्चन इज आंसर्ड? Yes. Thank you. So category 4 is compostable plastic. Compostable plastic में मतलब कुछ कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक्स आजकल कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं, विच कैन बी कंपोस्टेड ऑब्वियसली अंडर इंडस्ट्रियल कंडीशन। कंपोस्टेबल मतलब ये नहीं होता कि वो आप उनको कहीं पे भी अर्थ में छोड़ दो और वो खाद बन जाएगा, नहीं। इट हैज टू हैव अ टेम्परेचर कंडीशन, बट ऑब्वियसली it can be composted as a material which is not harmful for the nature. So that is called as category 4. So इसमें रूल में लिखा गया है कि plastic sheet or like used for packaging as well as carry bags should be made from compostable plastic. So it will be mandate in some days. So जितने भी industries deal कर रहे हैं compostable plastic also have to have a plastic packaging of category 4. Then comes category 5, which is very recent in the rule, that says that carry bags, sachets used for storing, packing, selling gutka, tobacco, pan masala has to be made from biodegradable plastics. So biodegradable मतलब ये होता है कि bio मतलब natural conditions में वो degrade हो सके. So it has to be made, क्योंकि these items like these ये जो बहुत छोटे sachets होते हैं, आप देखेंगे कि इसका सर्कुलेशन अभी बहुत कम हो गया है मार्केट्स में। बहुत सारे बड़े रिटेल शॉप्स में आप जाएंगे तो आपको वो शैम्पू के पाउचेज अब नहीं दिखेंगे, राइट। आपको वो ऑब्वियसली टोबैको, गुटखा ये सब दिखेगा, तो इसीलिए इसके लिए रेगुलेशन आई है कि इसको आपको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स में सेल करना है in case you are selling it. Yeah? Any questions on these category? 5 categories? No? So whenever a person is, registering or whatever category they belong to, whether they are a brand owner, they are a manufacturer, so they have to categorize their packaging under these 5 categories, right? Then again, when we understand what kind of client is it, so we understand what kind of waste they are producing. Packaging waste भी 2 टाइप का होता है, एक होता है पोस्ट कंज्यूमर, एक होता है प्री कंज्यूमर। तो सिंपल फिर इसका वर्ड मीनिंग बहुत इजीली बताता है। पोस्ट मतलब क्या हुआ, जो बाहर निकल गया, आपने कुछ चीज बनाई, पैकेजिंग बनाई और वो इंडस्ट्री तक पहुंचा दी, right? So that is called as post consumer, which is going outside the factory to the end consumer, right? That is sales, कि आपने कुछ चीज बनाई, आप प्रोड्यूसर थे या ब्रांड ओनर थे, आपने उसको सेल कर दिया, आपकी सेल इनवॉइसेस निकल गई, तो आपका वो बाहर चला गया। दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। एंड इन केस यू टॉक अबाउट प्री कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट, तो कई बार क्या होता है, जैसे आप एक इंडस्ट्री हो जो आप कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, लाइक आप गनी बैग्स बना रहे हो, राइट, वो जिसमें आपके अंदर एक थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक होता है। तो अगर आप वो बना रहे हो, कई बार उसमें आप सेल कर रहे हो, कई बार उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने वेयर हाउसेज में, और वो थैली फट गई, बहुत सारी 100 कुछ गनी बैग्स थे, उसमें से 50 गनी बैग्स आपके खराब हो गए, ठीक है। तो यू आर नॉट सेलिंग दोज गनी बैग्स टू एनी एंड कंज्यूमर, यू आर जस्ट
इट इज अ फैक्ट्री वेस्ट, जो आपने बनाया वो आपकी फैक्ट्री में ही है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज प्री कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट. सो इमेजिन दिस EPR और caters to both category of plastic packaging waste. तो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट या CPCB ने कौन सी रेगुलेशंस करी हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम प्लास्टिक वेस्ट के बारे में या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में. सो दे आर बेसिकली both these type of packaging waste are under scrutiny. जो बाहर जा रहा है, जो प्रोड्यूसर चाहे ब्रांड ओनर, जो भी हमने कैटेगरीज अभी देखी, जो बाहर सेल हो रहा है वो भी स्क्रूटिनी में है, और जो आपकी फैक्ट्री के अंदर एज अ वेस्ट है, जो आप अपने प्रॉब्ली स्क्रैप डीलर्स को दे देते हो, कबाड़ी वाले को दे देते हो, जो पहले केटर भी नहीं कर रहे थे, देखते भी नहीं थे कि वो कहाँ जा रहा है वेस्ट. ये दोनों टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को आपको जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको रजिस्टर कराना है, राइट, अंडर व्हेन दे फाइल अ रजिस्ट्रेशन फॉर इट. Any confusions in this? Post-consumer, pre-consumer? Any questions? Okay. So, in case I summarize all those EPR and plastic waste management rule EPR. So, plastic waste management rules are applicable to all types of business except for small and micro, right, for now. Then all importers must register with CPCB under PWM rule. If failed, custom will not release their shipment. जो भी import करते हैं उनको आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना आपकी शिपमेंट के टाइम पे उसको रोक दिया जाता है. तो इसलिए इट हैज बिकम अ मैंडेट, जो भी इंपोर्टर्स के अंदर फॉल करते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना इज इम्पोर्टेंट. देन रजिस्ट्रेशन इज ओनली अंडर CPCB ऑनलाइन पोर्टल. तो अब हम बोलते हैं जैसे ट्रैफिक रूल्स में होता था कि कई बार आपने पैसे देके काम करा लिया है, तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा. सो इट इज बेसिकली प्योरली एन ऑनलाइन पोर्टल थिंग. सो नथिंग कैन बी डन. यू हैव टू fill in all the details whenever you are producing, or brand owner, you are a brand owner. So you have to do the registration at CPCB, that is centralized portal, for registering yourself in any of the categories you belong to. देन EPR लाइबिलिटी जो बोलती है 2 फाइनेंशियल ईयर का. जैसे आपने जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग परचेज करी है, ठीक है, आप सेल कर रहे हैं. यस प्लीज आस्क. मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैम जो भी ये प्लास्टिक से रिलेटेड वर्क्स होते हैं किसी भी कंपनी में, मैम उस कंपनी में QC का क्या काम होता है मैम? क्वालिटी कंट्रोल का क्या काम होता है मैम? वो प्रॉपरली EHS टीम को रिपोर्ट नहीं करता है, और इसके बारे में मैम कुछ चीजें बताई भी नहीं जाती मैम QC टीम की तरफ से. आप बता रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल. See, so in case I talk about quality control, so in case you are making, जैसे few clientele are there, जैसे आपकी कोई पैकेजिंग रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जिसमें हम बोलते हैं कि वो रूल्स के अंडर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे. इन केस वी से दैट पैकेजिंग इज एसेंशियल, कि वो बहुत पतली पैकेजिंग है बट वो 50 माइक्रॉन से नीचे की है, राइट? तो रूल तो बोलते हैं कि 50 माइक्रॉन से नीचे नहीं हो सकता. सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय दैट टीम, दैट इट हैज टू बी रीडिजाइन बिकॉज द रूल से इट, और यू हैव टू फाइल फॉर एन एक्सेप्टेंस इन CPCB कि हमारे प्रोडक्ट को. तो ये सब चीजें देखी जाती है व्हेन यू कंसिडर these rules and filing your registration under EPR. तो होते हैं, एक्सेप्टेंस भी होते हैं. तो ये बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल टीम और सारी SCM, आपके सप्लाई चेन और ये सब का इन्वॉल्वमेंट होता है टू बेसिकली सी व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग यू आर हैविंग. क्योंकि पहले क्या होता था कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपकी स्क्रूटिनी में कहीं आती नहीं थी. मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग, यू आर सेलिंग, वी डू नॉट नो वेयर दिस प्लास्टिक बिलोंग्स टू, व्हाट कैटेगरी इज इट. तो अब क्योंकि इतनी सारी चीजें कैटेगरिकली आ गई हैं EPR सिस्टम के अंदर, सो पीपल आर डिस्कसिंग एंड दे आर फाइलिंग, क्योंकि उनके बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं. अगर आप नहीं करते तो देयर इज अ कॉम्पेंसेशन ऑल्सो. आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो. सो आपके लास्ट 2 फाइनेंशियल, इज योर क्वेश्चन आंसर? यस मैम, थैंक यू मैम. ओके, सो इन केस यू टॉक अबाउट लास्ट 2 फाइनेंशियल, तो लास्ट 2 जब भी हम EPR की बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो 2 लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आपकी बेसिकली सेल्स और परचेज या आपने प्लास्टिक पैकेजिंग करी है, उसकी बेसिकली सेल्स और परचेज आपकी वहां पे रजिस्टर होती है. देन आपने CIN, डज एनीवन हैज अ आइडिया अबाउट व्हाट इज CIN? CIN? Anyone? So in case you are an operating business and any industry, so you are having a corporate identification number. So you have a single corporate identification number जिसको basically ये
मेजर क्राइटेरिया होता है जब हम देखते हैं, जब हम क्लाइंट को कैटेगरिकली डिवाइड कर रहे होते हैं कि कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, किसने कितने कितनी उसके फैक्ट्रीज हैं, तो ये सब आपका सिंगल CIN नंबर पे उस कंपनी के नाम पे जो होता है उसको बिलोंग करता है, 1 CIN. या देन प्लास्टिक पैकेजिंग. यस, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप पीबोज इज बेसिकली प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, एंड PWP इज प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर. तो बेसिकली आप जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक स्क्रूटिनी में ये भी चीज आ रही है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड लोगों से डील कर रहे हैं, जैसे आपने किसी से, आप ब्रांड ओनर हो, आपने प्लास्टिक पैकेजिंग किसी से खरीदी, सो इन केस आप किसी अनरजिस्टर्ड एंटिटी से अभी डील कर रहे हो, तो उनको भी आपने जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराना है, सो दैट आपकी जो भी बाद में लाइबिलिटी जो भी बन के आती है वो कम से कम हो जाए, राइट. तो ये सारी चीजें अंडर दिस EPR हैज बीन वेरी नाइसली डिजाइंड, और आज अभी बहुत अच्छे से सब लोग इसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, एंड people are obviously taking responsibility of what they are producing and putting in the market. So air, water, hazardous waste consent is obviously when we go on to the client who are filing the EPR under this. So we look for air, water consent, जो आपने CTO, CT सब देखा था, तो वो भी हम लोग मांगा जाता है, वो अपलोड भी होता है when we file the registration for individual categories. Then after we do the registration, there is third party audit also. ऐसा नहीं है, पोर्टल में जब एक बार हो जाता है रजिस्टर, तो उसके बाद थर्ड पार्टी CPCB और SPCB की साइड से ही थर्ड पार्टी ऑडिट वेरिफिकेशन भी होता है, क्योंकि आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है उसको फुल प्रूफिंग एक बार देखा जाता है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो ऐसा है भी कि नहीं है. सो दैट हैपेंस लेटर व्हेन यू रजिस्टर. सो प्री कंज्यूमर, ऑब्वियसली आई वाज टेलिंग यू कि प्री कंज्यूमर जो आपका फैक्ट्री का वेस्ट है वो भी, और जो पोस्ट कंज्यूमर है, वो दोनों ही चीजें EPR कंप्लायंस के अंदर आती हैं. तो इसलिए जो भी चीज आपकी फैक्ट्री में हो रही है और जो फैक्ट्री के बाहर हो रही है, वो सब चीजों की आपको बेसिकली उस पर फाइल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, सब चीजें डिक्लेयर करनी है, राइट. Then I talk about EPR liability. Then EPR credit certificate is issued by registered PWP only. इसका मतलब जब आप सर्टिफिकेट, जब बेसिकली आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने डिक्लेयर कर दिया कि आपने कितना परचेज किया, प्लास्टिक पैकेजिंग कितना आपने सेल किया, उसके बाद आप एक प्रोसेस में जाते हैं, जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप एक रजिस्टर्ड ब्रांड ओनर हैं, तो उसके बाद आपका बेसिकली आपको क्रेडिट्स लेने होते हैं कि आपके, अगर आप 50 टन आपने मार्केट में आप भेज रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप उसको कहाँ अब आगे जाके, या आगे आपने किस रिसाइकलर को आपने दिया, अगर आपने सीमेंट फैक्ट्री में दिया है तो आपको उसके क्रेडिट्स लेने होते हैं मार्केट से, राइट, फ्रॉम अ रजिस्टर्ड PWE, दैट इज प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर. जैसे आपको सीमेंट की इंडस्ट्री की बात करें या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की बात करें, तो आप कहाँ भेज रहे हैं उसको, नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को भी, वो सब आपको डिक्लेयर करना पड़ता है और उनसे क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं, सो दैट इट कम्स अंडर सर्कुलेशन. ओके, सो 50 माइक्रोन थिकनेस की हमने बात करी. व्हेन यू फाइल द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो, व्हेन यू गेट द सर्टिफिकेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो आपका बेसिकली एनुअल रिटर्न होता है. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि आपने एक बार डिक्लेयर किया तो हर बार का आपका सेल्स और परचेज एक जैसी तो नहीं होगी, तो एवरी 6 मंथ्स, एवरी क्वार्टर इनफैक्ट यू हैव टू फिल इन दीज डिटेल्स कि आपकी इनवॉइसेस के हिसाब से आपने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, वो सब आपको पोर्टल में कंटिन्यूअसली भरना पड़ता है. Yeah, and I was talking about the environment compensation also, in case you say that what happens when somebody does not register. So there is a huge compensation. You must be reading about a lot of compensation being paid by big industry, क्योंकि जितना बड़ा business उतना बड़ा compensation, because 5,000 metric tons, मतलब per metric ton आपको cost, obviously compensation देना पड़ता है in case you do not get yourself registered in CPCB portal. So it is a huge compensation. So every industry, large, industry is basically very scared, and most of people are getting registered and obviously had registered in this EPR under EPR portal. So broadly speaking, it is again very technical. I can't, explain everything about the whole process of registration. But broadly speaking, what do we do in registration? तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं जब हम पीबोज रजिस्टर, पीबोज मतलब प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर, कोई भी कैटेगरी में जब बिलोंग करता है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इन केस एज अ कंसल्टेंट, व्हाट डू? यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कैटेगरी दे बिलोंग टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा.
तो उसमें आप कौन सी कैटेगरी में आएगा वो हम कई बार क्लाइंट को समझाना होता है कि व्हाट कैटेगरी यू बिलोंग टू. देन you take company's information like legal name, registered address, PAN क्या है, GST कंपनी का, CIN क्या है, ये सारा आपका बेसिकली उसमें पोर्टल में सब चीजें जाती है विद अ प्रूफ. देन CTO आपका है कि नहीं, आपका वैलिड CTO होना चाहिए. देन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सर्टिफिकेट, फैक्ट्री लाइसेंस, IEC मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड इन केस यू आर एन इम्पोर्टर, सो यू हैव टू हैव अ IEC, वैलिड IEC, दैट इज इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड. जो भी इम्पोर्टर्स होते हैं उनके पास ये इंडस्ट्री सर्टिफिकेट होता है. देन प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे आपको बताया मैंने कि EPR रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट क्या प्लीज आस्क. Rashmi, we are moving out as per the schedule. It's almost 6 minutes ahead. Just look into. All right, thank you, sir. Okay, so I will just briefly discuss the product information again. Product can